नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। और ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में पूछे गए थे। ये पार्ट 12 होगा और इसके पहले जो हैं वो कुछ एमसीक्यू सीरीज भी आई थी, तो टोटली ये करके और पार्ट 16 शायद तक होना चाहिए थंबनेल में। और क्वेश्चन 86 से 90 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो टुडेज वीडियोस फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंगस्टन ह्यूज, Zora Neale Hurston and County Cullen among others belong to a movement popularly known as। तो देखिए कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शंस वी हैव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, सिविल राइट एजिटेशन, Black identity crisis or Harlem Renaissance। So the right answer of this question will be option number 4, Harlem Renaissance। Explanation देखते हैं। The Harlem Renaissance was an intellectual and cultural revival of African American music, dance, art, fashion, literature, theater, politics and scholarship centered in Harlem, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। अब देखिए हर्लिम जो है वो एक जगह का नाम है। स्पैनिंग द 1920s एंड 1930s, एट द टाइम इट वाज नोन एज द न्यू नीग्रो मूवमेंट। तो इसको न्यू नीग्रो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेम्ड आफ्टर द न्यू नीग्रो 1925 एंथोलॉजी एडिटेड बाय एलन लॉक। तो न्यू नीग्रो जो है वो एक एंथोलॉजी है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1925 एंड इट वाज एडिटेड बाय एलन लॉक। Writers of Harlem Renaissance created a wide range of literary works from poetry to play to prose and to novels. Main themes of the writing were about racial identity, equality, black life in South and North, and other racial issues. Authors of the Harlem Renaissance used a different स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो इनका स्टाइल जो है वो कुछ डिफरेंट था और हर लिटरेरी जॉनर को इन्होंने अप्रोच किया था। और कुछ जो राइटर्स हैं वो इस तरह हैं। क्लॉड मैकाय इज जनरली कंसीडर्ड द फर्स्ट मेजर पोएट ऑफ हर्लिम रेनेसांस। सम ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ लिटरेरी हर्लिम रेनेसांस वर जीन टूमर, जेसी फॉसेट, क्लॉड मैकाय, जेम्स वेल्डन जॉनसन, एलन लॉक, एरिक डी वेलरॉन, Zora Neale Hurston and Langston Hughes। तो ये जो कुछ राइटर्स हैं ये हर्लिम रेनेसांस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड राइट्स नॉवल नेटिव सन टेल्स द स्टोरी ऑफ। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिचर्ड राइट का जो नॉवल है नेटिव सन, उनके प्रोटैगनिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑप्शंस वी हैव बिगर थॉमस, शग एवेरी, मिस्टर बेलमोंट एंड जेमी क्रेनफोर्ड। So the right answer of this question is option 1, Bigger Thomas। Explanation देखते हैं। Native Son that was published in 1940 is a novel written by the American author Richard Wright। It tells the story of 20-year-old Bigger Thomas, a black youth living in utter poverty in a poor area on Chicago's South Side in 1930s। तो देखिए 1930s में है जो इसकी नॉवल की सेटिंग है, हालांकि पब्लिश 40 में हुआ है। नेटिव सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेटिव सन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, फियर, फ्लाइट एंड फेट। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो नेटिव सन है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो 3 सेक्शंस आर देयर, फियर, फ्लाइट एंड फेट। जॉनर की अगर बात करें तो दिस इज एक नॉवल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन है और सोशल नॉवल भी है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो बिगर थॉमस जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट हैं। इसके अलावा मैरी डल्टन, जेन एर्लॉन, मिसेस थॉमस और हेनरी डल्टन जो हैं वो इसके कुछ और कैरेक्टर्स हैं। कुछ और एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। नो अमेरिकन नीग्रो एग्जिस्ट, जेम्स बाल्डविन 1 wrote, who does not have his private bigger Thomas living in his skull। तो देखिए ये बात जो है वो जेम्स बाल्डविन ने खुद कही है, that no American Negro exists who does not have his private bigger Thomas living in his skull। और देखिए फ्रेंच फैनन जो हैं उन्होंने भी इन फीलिंग्स को डिस्कस करते हुए अपने 52 का एक ऐसे है जिसका इंग्लिश नेम है द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। उसमें ये लिखा है, इन द एंड बिगर थॉमस एक्ट्स to put an end to his tension.
he acts, he responds to the world's anticipation. तो ये बात जो है वो फ्रेंच फैनन ने कही है. Next question. Womanist is to feminism as purple is to lavender is a phrase used by. देखिए पर्पल नाम सुनते ही आपको डेफिनेटली उस राइटर की याद आ गई होगी जो इसका राइट आंसर है. ऑप्शंस वी हैव टॉनी मॉरिसन, एलिस वॉकर, रीटा डाउ, Gloria Naylor. So the right answer of this question is option 2, Alice Walker. Let's see the explanation. Author and poet Alice Walker first used the term womanist in her short story Coming Apart that was published in 1979, and later in Search of Our Mother Gardens, Womanist Prose 1983, Walker defined a womanist as a black feminist or feminist of color. The term comes from the black folk expression of mothers to female children, you acting womanish, referring to grown-up behavior. तो देखिए, if this is said that you acting womanish, तो ये जो है ये एक grown-up behavior को refer करता है. और जो exactly एलिस वॉकर ने कहा है उनके सेम जो शब्दों में, she goes on to say that womanist is also a woman who loves other women sexually and or non-sexually, appreciate and prefers women's culture, women's emotions, flexibility and women's strength, committed to survival and wholeness to entire people, male and female, not a separatist except periodically for health, loves music, loves dance, loves the moon, loves the spirit, loves struggle, loves the folk, loves herself regardless. Womanist is to feminist as purple is to lavender. So ये जो quotes हैं वो इनके वर्क में से हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट टॉनी मॉरिसन्स नॉवल इज. तो देखिए टॉनी मॉरिसन से ये क्वेश्चन पूछा गया है. टॉनी मॉरिसन नॉवल लॉरिएट है. 1993 में उनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था. ऑप्शंस हमारे पास हैं अ मर्सी, God Help the Child, Home and Jazz. So the right answer of this question is option 2, God Help the Child. And जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये इनका 2015 में पब्लिश हुआ था. ऑप्शंस जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं. क्लॉय एंथनी वॉफोर्ड मॉरिसन ये इनका पूरा नाम है. शी was born in 1931 and recently before 4 years she died in 2019. Known as Toni Morrison, was an American novelist. Her first novel, The Bluest Eyes, was published in 1970. And और अगर आपने टॉनी मॉरिसन के बारे में पढ़ा है तो Bluest Eyes की जो प्रोटैगनिस्ट है शी इज़ पिकोला. मुझे ये नाम बहुत ही सुंदर लगता है, पिकोला. The critically acclaimed Song of Solomon was published in 1977, brought her national attention and won the National Book Critique Circle Award. In 1988, Morrison won the Pulitzer Prize for Beloved 1987 and she was awarded the Nobel Prize in Literature in 1993. Notable works इनके देख लेते हैं. Bluest Eyes publish हुआ है इनका 1970, Sula 1973, Songs of Solomon 1977, Tar Baby 1981 and Beloved 1987. और भी इनके वर्क्स हैं. Jazz 1992, Paradise in 1997, Love 2003, Mercy 2008, Home 2012 and God Help the Child as I Was Right ये 2015 में पब्लिश हुआ है. लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का. Go Tell It on the Mountains is a semi-autobiographical novel written by. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वर्क के राइटर का नाम बताना है. ऑप्शंस वी हैव टॉनी केट बम्बारा, Amiri Baraka, Ralph Allison or James Baldwin. So the right answer is option 4, James Baldwin. Explanation देखते हैं. To tell, Go Tell It on the Mountains is a 1953 semi-autobiographical novel by James Baldwin. अगर आपको याद हो तो 1953 में ही जो सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट है उसको प्रीमियर भी किया गया था. It tells the story of John Grimus, an intelligent teenager in 1930s Harlem, and his relationship with his family and his church. The novel also reveals the backstories of John's mother, his biological father, and his violent, fanatically
रिलीजियस स्टेप फादर गैब्रियल ग्रिमस, तो इनके जो ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है, स्टेप फादर हैं. The novel focuses on the role of Pentecostal church in the lives of African American, both as negative source of repression and moral hypocrisy and a positive source of inspiration and community. मैं आपको ये बात बता दूं कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो काफ़ी हद तक जेम्स बॉल्डविन की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है. ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. जेम्स बॉल्डविन was born in 1924 in Harlem to an unwed mother who had left Maryland for New York and never knew his biological father. Several years later, his mother married a much older laborer and Baptist preacher from Louisiana who had come north in 1919. James Baldwin took his stepfather's surname and was raised as his son along with his many half-siblings. He later described his stepfather as brooding, silent, tyrannical, and physically abusive. He was also a storefront preacher from morbid intensity. So friends, ये थी जो एक्सप्लेनेशन है वो गो टेल इट ऑन द माउंटेन्स की, जो कि जेम्स बॉल्डविन ने लिखा है और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज के वीडियो में इतना ही और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.